Hello class 5th, you all are welcome back again in your EVS class. So finally today we are going to study our last chapter from your EVS book. Chapter number 19, Physical Features of India, Unit 7, India, My Country. Here we have activity. So you have to answer the following question. Then इंडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों। बच्चों जैसे हमारी फीचर्स हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके दोस्त की नाक कैसी है, आंख कैसी है, बाल कैसे हैं, या आपके दूसरे दोस्त की कैसी है, तो सबके फीचर्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं ना बच्चों। वैसे ही हमारा जो देश है उसके भी फीचर्स अलग हैं। कहीं पर्वत है तो कहीं मारुस्थल है, तो कहीं बच्चों पहाड़ है, कहीं प्लेन्स है, कहीं हिल्स है। इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री है और ये बहुत ही सुंदर कंट्री है। इसको भारत और हिंदुस्तान भी कहते हैं। इट इज बिग इन बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। द एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32, 87, 263 in number square kilometer and it is the seventh largest country. ये seventh largest country है बच्चों. India is the second most, but now India is the first populated country बच्चों. सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा देश हो गया है. इंडिया कहाँ लाई करता है बच्चों? It lies to the north of the equator between 8°4 and 37°6 north latitude and 68°7 and 97°25 east longitude. Here you can see our country India in the map. बच्चों आप अब देख सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, then we have east and then we have west here. Okay, so the upper part is mountain part, the middle part is your plateaus, then we have northern part, it is your northern plain, then we have the side part, it is your coastal areas. Now we are going to discuss briefly about the physical features of India. Arabian Sea and it is bounded on the southwest by Arabian Sea and on the southeast by Bay of Bengal, and on the north, northeast and northwest lie the Himalayan ranges. The southernmost tip of the Indian mainland, Kanyakumari, is washed by Indian Ocean. India measures 3214 km from north to south and 2933 km from east to west. It has a land frontier of 15,200 km and a coastline of 7516.5 km. The Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Islands in the Arabian Sea are parts of Indian territory. India shares its political borders किसके साथ बच्चों? इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं आपकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, Bhutan on the east, China, Nepal and Bhutan. The northern part share borders with China, Nepal and Bhutan. Now, India का physical features बच्चों divided है 5 parts में. India has many different types of land surface like mountain, plains, a desert, rivers, forest, lakes, island, ocean, valleys, etc. And this can be divided into 6 main physical regions, namely the Himalayan mountains, the peninsular plateau, the coastal plain, the northern plain, the Indian desert and the island. अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सबसे पहले बच्चों हम नदर्न माउंटेन डिस्कस करेंगे. नदर्न माउंटेन बच्चों क्या है? द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि बच्चों नॉर्थ डायरेक्शन में आप देख सकते हैं वी हैव 4 डायरेक्शन. नॉर्थ में जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो नदर्न माउंटेन है. दीज आर रिफर्ड टू एज द नदर्न माउंटेन्स और हिमालयाज. हिमालयाज का मतलब होता है बच्चों अबोर्ड ऑफ आइस एंड स्नो, एंड द हिमालयाज स्ट्रेच करता है बच्चों काराकोरम रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. एंड द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. Mount Everest in the Himalayas is the highest peak, 8848 meter in the world, and it is situated in Nepal. Kanchenjunga and Nanda Devi, they are 2 of the highest peaks in India. Mount Godwin, or then we have Austin, also known as K2, 8611 meters. बच्चों ये जो फैक्ट है, ये जो डाटा है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है. नंबर 1 कौन सा है बच्चों? माउंट एवरेस्ट. सेकेंड वी हैव माउंट गॉडविन और K2. ओके, so here you can see the northern mountain. Now number 1 कौन सा है बच्चों? माउंट एवरेस्ट. सेकेंड we have माउंट गॉडविन और K2. ओके,
So here you can see the northern mountain. Now the Himalayan range is divided into three parts. The Great Himalayan Range or Himadri, the the Himachal, Lesser Himalayas and the lower is known as Shivalik. बच्चों उसके बाद बच्चों मैदानी क्षेत्र आ जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाती है. इन द साउथ ऑफ हिमालयन रीजन देयर are the northern plains, and these great plains of India, they are also known as Indo-Gangetic plains, lie at the foothills of Himalayas, and they stretch from Punjab in the west to Assam in the east. Lying in the south of Himalayas, they are about 2,400 kilometers long and about 150 to 300 kilometers wide. The northern plains are the largest and the most fertile plains of the world. The Ganga, the Brahmaputra and the Satluj, they are the most important river of these plains, and all these rivers rise in the Himalayas, and these plains have three rivers. कौन-कौन सी बच्चों? सतलज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन. बच्चों सतलज रिवर पे वी हैव भाखरा नंगल डैम, which is one of the biggest dam of India. जो river है Brahmaputra is always flooded in rainy seasons because this basin receives the heaviest rainfall and it overflows its bank causing floods. Main town क्या है? The main town in the Brahmaputra basin are Shillong and Guwahati. Tea is grown on the slopes of hill. Rice, jute and tea ये क्या है? ये main crops हैं of the basin के, and the northern plains are very important for our people and our country. Farming क्या है? Main occupation है plains का. These plains are the granary of India. Here the farmer produce more food grain than farmers of any other part of the country. About half of the population of country lives in these plains. Now let's answer the following question. Then we have Great Indian Desert. बच्चों रेगिस्तान, मारुस्थल, a desert एक ऐसी जगह है बच्चों, it is covered with sandy pieces of land where it is very little rain and not many plants and vegetations. The only means of transport here is the camel. ठीक है बच्चों, जो ऊंट है यहाँ का मेन ट्रांसपोर्ट है. ऊंट को बच्चों कैमल को द शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं. वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हैज लार्ज सैंडी एंड रॉकिंग एरिया. It is called Thar Desert and it is situated mainly in Rajasthan with a part of it stretching into Pakistan. The scarcity of water has kept this region barren and a few shrubs and bushes like cactus, खीक और बबूल यहाँ उगते हैं बच्चों. तस्वीर आप देख सकते हो बच्चों, सैंड ड्यून्स आपको दिखाई दे रहा होगा और कैमल दिखाई दे रहे होंगे. उन पे बच्चों दो आदमी भी बैठे हैं क्योंकि कैमल जो है मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है डेजर्ट का. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज partially rocky and partially sandy. To its east lie the Aravalli Hills. The climate here यहाँ extreme होता है, बहुत ज्यादा hot होती है समर में, बहुत ज्यादा ठंडी होती है विंटर में. Dust storms, they are very common in the desert. They blow sand from one place to another and hills and loose sand are formed. और बच्चों इन हिल्स को हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं. देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है. द ओनली रिवर जो यहाँ बहती है बच्चों दैट इज लूनी विच इज नॉट मोर देन एन ओकेजनल स्ट्रीम एंड इट इज अ सीजनल रिवर जो फ्लो करती है फ्रॉम रन ऑफ कच्छ. इट इज द ओनली रिवर दैट ड्रेन्स द इंडियन डेजर्ट एंड wherever there is water spring in desert the land become green. और sometime there is no rainfall here for year. कभी कभी बच्चों साल भर में कोई भी बारिश नहीं होती. Some of the major towns of Great India deserts are बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर. कैमल्स बच्चों यहाँ फिर से दोहराया गया है चैप्टर में पॉइंट. मेन ट्रांसपोर्ट है, उनको शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं. द इंदिरा गांधी कैनाल और राजस्थान कैनाल which brings water from the river Satluj has changed the lives of people here to great extent and it has converted a large part of this desert into fertile land. The people of the desert उन्हें बच्चों nomads बोलते हैं. वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह in better place of life वो घूमा करते हैं. They do not have permanent houses and some of nomadic groups जैसे कि बच्चों बंजाराज हैं, they make things like pan, tools and some kinds of pot from iron. They use camel for transportation. कुछ जगह पे बच्चों अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू सरफेस सो द क्लस्टर ऑफ टॉल पाम ट्रीज वहां होती है बच्चों. उस तरह के फर्टाइल ट्रैक्ट को ओएसिस कहते हैं. द पीपल ऑफ द डेजर्ट ग्रो क्रॉप्स लाइक मिलेट एंड पल्सेस जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. मेनी पीपल वर्क इन माइंस ऑफ कॉपर, जिंक एंड माइका. देन वी हैव सदर्न प्लेट्यू बच्चों. साउथ में सदर्न प्लेट्यू, यहाँ बच्चों ये क्या है, ये एक हाईलैंड है जो कि टॉप से फ्लैट है. To the south of northern plains lies the southern plateau.
कौन कौन से सिटी स्टेट्स हैं यहाँ बच्चों? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार एंड अपर पार्ट ऑफ ओडिशा आर द एरियाज इंक्लूडेड इन द सदर्न प्लेटू. The southern plateau ये divided है बच्चों into two parts of river Narmada, and the southern part is known as Deccan Plateau. The northern part is known as Central Highland. और बच्चों जो consist करता है मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू. The southern part ये cover करता है बच्चों largest part of country को, and this vast region is roughly triangular in shape. इसका shape बच्चों triangular है. To the northwest of the plateau lie the Aravalli Hills. Then we have Rajmahal Hills are the northeast of plateau. And the eastern region of plateau is called Eastern Ghats और western region को हम Western Ghats बोलते हैं, जिसमें बच्चों नीलगिरी और कार्डमम हिल्स भी इंक्लूडेड है. The plateau बच्चों मिनरल्स में रिच है, स्पेशली द छोटा नागपुर प्लेटू जहां कोल, आयरन, माइका एंड मैग्नीज भारी मात्रा में पाए जाते हैं. फेमस Kolar gold mines in Karnataka are also located here, and this region also has thick forest of teak, bamboo, sandalwood and sal. Climate कैसा है बच्चों? The climate of southern plateau does not have extreme condition of heat, cold and rain. और ये region बच्चों experience करता है average rainfall को. The fertile black soil ये मिलती है, which is the best suited for cultivation of cotton. This brings enough money for farmers to lead a good life. Our main river of this region are Mahanadi, the Godavari, the Krishna and Kaveri, and these rivers provide water for irrigation and hydroelectricity. Then we have coastal plains. Plains क्या होती है बच्चों? Coastal एक ऐसी जगह होती है जहां sea और land meet करते हैं. A mass of land surrounded by water from three sides, उसे हम peninsula बोलते हैं. India has a long coastline on both of its eastern and western sides. The land which lies between the sea and the mountain ranges उन्हें हम coastal plains बोलते हैं. बच्चों जो coastal plains हैं, they are found between the Western Ghat and the Arabian Sea on the west coast and the Eastern Ghats of the Bay of Bengal on the east. और both the coastal plains they meet at Kanyakumari. The western coastline बच्चों begin करती है गुजरात से, खत्म होती है southern tip of India में. The climate along the coast cause heavy rainfall, agriculture और dairy यहाँ का main occupation है. The eastern coastline stretches from Kanyakumari that is located in the southern tip of India to Ganga Brahmaputra Delta in the West Bengal. Farming और fishing बच्चों another यहाँ का important occupations है. Then here we have some of the important place towns: Rameshwaram, Puducherry, Chennai, Vishakhapatnam, Kolkata, and western coast. The important seaports are Khandala, Mumbai, Panaji, Mangalore, and Kochi. Let's do it. So you have to answer the following question. Then we have the island group of India. Island एक ऐसी जगह होती है बच्चों जो चारों तरफ पानी से covered रहती है. Island are the masses of land that is surrounded by water all side. So in India we have the Andaman and Nicobar Island that lie in Bay of Bengal and Lakshadweep Island that is located in Arabian Sea. The Andaman and Nicobar Island, this is a group of 300 big and small island. Their capital is known as Port Blair. और बहुत सारे tribal people है बच्चों जो यहाँ रहते हैं. These islands are known for their fisheries, tourism and ship repairing industries. People here grow rice, coconut, pineapple, sugarcane, spices and rubber. Then we have the Lakshadweep. Lakshadweep क्या है? यहाँ का smallest union territory of India है. It is a group of 36 island which only 10 are inhabited. और बहुत सारे लोग बच्चों यहाँ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं. कवराती कैपिटल है लक्षद्वीप का. यहाँ बच्चों क्वायर मेकिंग एंड फिशिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. Then climate in our country, हमारे कंट्री में क्लाइमेट कैसा रहता है बच्चों? So climate हर जगह पे अलग अलग रहता है, differ from places to places. The surface of land it varies from region to region. कुछ places है बच्चों that are near to sea while other are far from the sea. Now there are mountain, plains, desert and plateau. और जितने सारे factors हैं ये influence करते हैं the climate of various parts of our country. The three main seasons कौन से बच्चों हमारे भारत में? समर है, ग्रीष्मकाल है, विंटर है बच्चों, ठंडी का सीजन है, रेनी सीजन है बच्चों जिसे हम मॉनसून भी कहते हैं. समर सीजन लास्ट फ्रॉम मार्च टू एंड ऑफ जून. रेनी सीजन बच्चों स्टार्ट फ्रॉम जून टू सितंबर और विंटर सीजन स्टार्ट एंड लास्ट from October to February. समर में बच्चों नॉर्दर्न प्लेन गेट्स मैक्सिमम हीट. टेम्परेचर बच्चों कभी कभी 49 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा राइज हो जाता है. द सदर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो हॉट इन समर बट नॉट सो हॉट इन नॉर्दर्न पार्ट. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द विंटर सीजन.
रेनी सीजन में क्या होता है बच्चों? द मानसून विंड ब्लो अक्रॉस द इंडियन ओशियन पिकिंग अप द क्लाउड्स, and the Thar desert in the northwestern part of the country receive less than 25 centimeter of rain per year, whereas Mausonoram in Meghalaya receive the heaviest rainfall 11873 meters each millimeter each year in the world. बच्चों कौन कौन से फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट और टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं. लैटिट्यूड, सिंस द वर्ल्ड इज स्फीयर, दुनिया गोल है, नॉट ओनली द प्लेसेस रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट, एज वी मूव फ्रॉम इक्वाटर टू द पोल्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स. एल्टीट्यूड, एज वी क्लाइंब हायर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर जो है ड्रॉप करता है. प्रेशर एंड विंड सिस्टम, देन वी हैव प्रॉक्सिमिटी टू सी के करीब कौन कौन सी बच्चों जगह है. ओशन करंट भी बहुत ज्यादा रोल निभाता है बच्चों. द टेम्परेचर ऑफ एन एरिया विल बी लोअर्ड बाय कोल्ड ocean currents passing over it, while its temperature will be rise by warmer currents. Then we have relief features, the barriers that prevent the entry of the stream into the country, they are also known as relief faculties. And cold and warm winds, they are blocked by high mountains. Then climate changes over here. The planet's average surface temperature बच्चों अब वो क्या हो गया है? rise हो चुका है up to 2 degree Fahrenheit, 1 degree Celsius since last 19th century, and a change driven largely by increased carbon dioxide emission into atmosphere and other human activities. That's all about this chapter. Revise the chapter once again, read the chapter once again, and that's all about this class. Take care of yourself, keep on learning, exploring, keep on reading, keep on revising your chapter. All the best from my side. Take care. Thank you so much. Bye-bye.